इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स की तैयारी करेंगे। पहला है बिलीव वर्सेस बिलीफ। पहला बिलीव वर्ब है, इसका मतलब है टू हैव कॉन्फिडेंस और फेथ इन समथिंग। सेंटेंस है आई बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन। दूसरा बिलीफ नाउन है, इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी और श्योरनेस अबाउट समथिंग। सेंटेंस है हर बिलीफ इन गॉड गेव हर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट है अडेप्ट वर्सेस एडॉप्ट। अडेप्ट वर्ब है, जिसका मतलब है टू एडजस्ट और मॉडिफाई समथिंग टू फिट अ न्यू सिचुएशन। सेंटेंस है the company had to adapt its business model to stay competitive. Adopt भी verb है, इसका मतलब है to take on or accept something as one's own. Sentence है they adopted a child from a foreign country. Next है canvas versus canvas. पहला canvas noun है, इसका मतलब है a fabric used for painting or a tent. Sentence है The artist painted a beautiful landscape on canvas. दूसरा canvas verb है, इसका मतलब है to propose an idea for discussion. Sentence है The politician canvassed the neighborhood to gather support for her campaign. Next है censor versus censor. पहला सेंसर वर्ब है, इसका मतलब है टू एग्जामिन एंड कंट्रोल व्हाट इज पब्लिश्ड और शोन। सेंटेंस है द गवर्नमेंट सेंसर द न्यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिस्प्यूट। दूसरा सेंसर नाउन है, इसका मतलब है अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और मेजर्स समथिंग। सेंटेंस है द सेंसर इन द कार डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अ पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है क्लाइमैक्टिक वर्सेस क्लाइमेटिक। क्लाइमैक्टिक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है फॉर्मिंग अ क्लाइमैक्स और मोस्ट इंटेंस मोमेंट। सेंटेंस है द क्लाइमैक्टिक सीन इन द मूवी वाज ब्रेथटेकिंग। क्लाइमेटिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रिलेटिंग टू क्लाइमेट और वेदर। सेंटेंस है द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द रीजन मेड इट आइडियल फॉर फार्मिंग। नेक्स्ट है डिवाइस वर्सेस डिवाइस। पहला डिवाइस नाउन है, इसका मतलब है अ मशीन और ऑब्जेक्ट मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेंटेंस है द डिवाइस हेल्प टू प्यूरिफाई द वाटर। दूसरा डिवाइस वर्ब है, इसका मतलब है टू प्लान और इन्वेंट समथिंग। सेंटेंस है द टीम डिवाइस्ड अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है डिस्क्रीट वर्सेस डिस्क्रीट। पहला डिस्क्रीट एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है सेपरेट और डिस्टिंक्ट। सेंटेंस है द डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ द मशीन वर्क टुगेदर सीमलेसली। दूसरा डिस्क्रीट भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है केयरफुल एंड सब्टिल इन वंस एक्शंस और स्पीच। सेंटेंस है She was discreet about her personal life, preferring to keep it private.